आजा। Question number 286. Play company. Let's start. Using 15% as after-tax discount rate, advise Play company on the desirability of purchasing the equipment. Your working should be shown to the nearest thousand. ठीक है. Play company manufactures safety surfacing for children playgrounds. The main raw material required is rubber particles, and these are currently purchased from an outside supplier for 3.5 per ton. The price is contractually guaranteed for the next 4 years. If the contract is terminated within the next 2 years, Play company will be charged an immediate termination penalty of 150 the 1,50,000, which will not be allowed as tax deductible expense. Okay. The directors are considering investing in equipment that would allow Play company to manufacture these particles in-house by using recycled tires. The machine required in process the tires will cost 4 lakh, and it is estimated that at the end of year 4 the machine will have a second hand value of 50,000. चलो सबसे पहले इतनी इंफॉर्मेशन तो लिख देते हैं. इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी 4 लाख की. हाँ, बाद में हमें यहाँ पे मिलेगी वो स्क्रैप वैल्यू which is 50,000. The cost associated with new venture are as follows. The fixed cost, variable cost 0.8. ठीक है. Additional fixed cost include maintenance cost of 40,000 and the additional depreciation. All of the above are quoted in current price term. The inflation increases. Okay. फिर उनकी डिमांड दी गई है. तो हमें सबसे पहले अभी दिया गया वेरिएबल कॉस्ट. सेल्स के बारे में अभी यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया, तो उसको बाद में करते हैं फिलहाल के लिए. सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कर देते हैं. पॉइंट 8 कॉस्ट पर टन inflated cost per ton inflationary variable cost 1.03. फिर इसके यूनिट्स, तो ये हमारा हो गया वेरिएबल कॉस्ट पर टन विद इन्फ्लेशन जो इसका है 3% का. बाद में तो ना ठीक है, फिलहाल के लिए 3% हो गया. फिर इसका डिमांड यूनिट्स 1 लाख 10 1,30,000
60 will cost फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 1,92,000 है, लेकिन the additional fixed cost include maintenance cost of 40,000 and the additional depreciation charge calculated on straight line basis over the life of the 4 year. मतलब इस fixed cost के अंदर एक तो 40,000 है और दूसरी एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज भी है। अच्छा, तो इस पे तो पूरा नया ही बनाना पड़ेगा। तो कॉस्ट लेस लेस मेंटेनेंस कॉस्ट depreciation है fixed cost inflation inflated fixed costs 1,92,500 to 40,000 as additional charge। अभी सबसे पहले हमें डेप्थ निकालना पड़ेगा, लेकिन मैं एक काम कर देता हूँ, इसको फिक्स कॉस्ट में यहाँ पे डाल के रख देता हूँ। जब भी डालूंगा तभी लिंक के साथ वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिगर आ जाएगी, है ना। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, थर्ड आता है टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन, डेप्थ इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू, नहीं नहीं, एक मिनट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2। नहीं यार, डिवाइड बाय क्या था, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स कितने मेरे पास, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। सो माय इनिशियल इन्वेस्टमेंट was this much, स्क्रैप वैल्यू इतना, नंबर ऑफ इयर्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट 4 लाख, फिर नंबर ऑफ इयर्स, ये तो ये आ गया हमारा स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। फिर हमें ना हम दोनों को थोड़ा कम कर देता हूँ,
पे लाइन डेप्रिसिएशन आ गया 87,500 का। तो ये यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली लिंक से हो गया कम, ठीक है। तो हमारा टैक्स लायबल डेप्रिसिएशन में सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, इसको नीचे लेके जाता हूँ और लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन, टैक्स लायबल डेप में। अगेन पहली बात तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना था, जि- जितना भी था। फिर आता है डेप्रिसिएशन, अब आता है डेप विच इज 87,500। फिर पॉइंट भी टैक्स, लिखा हमारा टैक्स रेट कितने का है पहली बात तो। नो नो नो, वेट वेट वेट, they have said something is below there. Profit after tax is 30% for your payable in 1 year in arrears. Tax allowable debt, मतलब depreciation normal straight line basis पे, लेकिन tax allowable debt is at 25% reducing balance would be claimed at the cost of the machine when balancing allowance being claimed in the fourth year of operation. Okay, मतलब यहाँ पे reducing balance basis पे ही होगा और tax rate है 30%। तो हमारा कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ पे हमें आएगी 50,000 की स्क्रैप वैल्यू, बैलेंसिंग अलाउंस। अलाउेबल डेप्रिसिएशन, हाँ पहले तो टैक्सेस पेबल इन अरियर्स, हाँ इन अरियर्स। तो इसको भी मैं यहाँ पे ही डाल देता हूँ। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स प्लस स्क्रैप वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स आता है। Let's just drag this thing down here. टैक्स में यहाँ पे लगा ही देता हूँ टैक्स। यहाँ पे से सम कुछ और बाकी है क्या, अदर फिक्स कॉस्ट का 2% रेट पे बढ़ रहे थे, मैं वो भी बढ़ा दिया इधर। एक मिनट, वेरिएबल कॉस्ट इतने से बढ़ रहे थे, मेंटेनेंस कॉस्ट मेरे मेरी मेंटेनेंस कॉस्ट बाकी है ना, मेंटेनेंस कॉस्ट मेरे मेंटेनेंस कॉस्ट बाकी है यहाँ पे। मेंटेनेंस कॉस्ट वन, मेंटेनेंस कॉस्ट कॉस्ट 40,000 इन्फ्लेशन 0.05 inflated cost। फिर ये भी हो गया, मेंटेनेंस कॉस्ट भी हो गया, एक मिनट हाँ, डेप भी हो गया, एडिशनल कॉस्ट में इन्फ्लेशन भी चार्ज कर दिया, डिमांड भी हो गई सारी की सारी। टैक्स बाकी है क्योंकि अभी तक हमारा सेल्स बाकी है और 25% डेप भी हो गया। मुझे यहाँ पे कहीं पर भी ना सेल्स नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कहीं पर भी सेल्स नहीं है। सो व्हाट वी विल डू इज, हम ना यहीं की जो सेल्स है ना ये 3.5 पर टन ये हम परचेज करें, वी विल अज्यूम दिस ओनली एज अवर सेल्स। एंड हमारा नीचे आएगा वर्किंग नोट में
6 में सेल्स। सेलिंग प्राइस, लोग इतने से खरीद रहे हैं, आउटसाइडर से हम इतने में खरीद रहे हैं, तो हम इतने में तो हम बेच ही रहे होंगे, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं इस केस में। ठीक है, तो हमारी जो डिमांड आएगी वो आएगी यूनिट्स की 1 लाख, 1 लाख 10, 1 लाख 30 एंड 1 लाख 60। हमें बराबर लिखी थी मैंने, बिल्कुल बराबर लिखी थी मैंने। नोट यहाँ पे सेल हो जाएगी इतनी। वर्किंग नोट नंबर 6, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 5। ये हो गई, ये होती है वर्किंग नोट नंबर 4 थी शायद, ये टैक्स लायबल डेट ना, 4। इस पे जाने दो। ठीक है, तो मैं फिलहाल के लिए आ गई। टैक्स भी हम 1 ईयर इन अरियर्स चार्ज करेंगे। रेट है हमारा 30% का। रेटिंग प्रॉफिट डिस्काउंटिंग द रेट ऑफ 12% वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी। डिस्काउंटिंग कितने पे, सॉरी 15% पे हो रही है डिस्काउंटिंग, तो उसकी भी एनपीवी वैल्यू निकालनी पड़ेगी 15% के हिसाब से। 0.87, फिर आती है 0.756, फिर आती है 0.658, लास्ट में आती है 0.572, फिर आती है लास्ट में 0.497। तो इतने की आ गई मेरी ये एनपीवी फिलहाल के लिए। लेकिन इसमें से मेरी पेनल्टी कॉस्ट माइनस होगी। पेनल्टी, क्योंकि हमने अगर हमने इतना सब निकाला हुआ है तो उन्हें यहाँ पे बोला हुआ था कि हमें पेनल्टी पे करेंगे टर्मिनेशन पे, विच इज 1,50,000 की पेनल्टी होगी। मुझे आ रहा है एनपीवी, अब ये मेरा एक्चुअल एनपीवी है। इसको मैं ना बोल्ड नहीं कर रहा, इसको कलर करता हूँ। एक मिनट ना, सबसे पहले चेक करने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमने सब कुछ कंसिडरेशन के अंदर लिया है कि नहीं। सब माइनस की थी मैंने चीजें यहाँ पर। रेड पर्पल ग्रीन माइनस में है। यहाँ पे क्या हो रहा था, पिंक माइनस में है, पर्पल ऐड है, ग्रीन भी ऐड है। हाँ वो ठीक है। हाँ, एक सारी चीजें कंसिडरेशन के अंदर ली थी हमने वैसे तो। चांसेस -18,000 मेरे हिसाब से, चेक कर लेते हैं एक बार। 26 के लिए पेज नंबर 286, -18। ठीक है, -18 आ गया। इन्होंने यहाँ पे कैसे किया है, 533 देन -400 एंड देन -150। मैंने यहाँ पे 400 पहले माइनस किया था, फिर बाद मैंने यहाँ पे 150 का पेनल्टी माइनस किया। आंसर आई गॉट वाज 18 इन नेगेटिव
सेम एज दे, ठीक है। हाँ, इन्होंने बोला क्लोजेस्ट 1000 में, तो ऐसा लिख देंगे, ठीक है? चलो, थ्योरी के लिए वेट करते हैं राहुल का। आ जाते हैं अभी थ्योरी पे, राहुल का हो गया। आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली डिस्कस फोर लिमिटेशंस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू के टेक्निक्स व्हेन अप्लाइड टू इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। NPV is commonly used technique employed in investment appraisal, but it is subject to number of restrictive assumptions and limitations that call into question its general uh, rele- relevance. Nonetheless, if the assumptions and limitations are understood, then its application is less likely to be undertaken in error. NPV assumes that firms pursue an objective of maximizing the wealth of their shareholders. This is questionable given the wider range of stakeholders who might have conflicting interests to those of the shareholders. NPV is largely redundant if organizations are not wealth maximizing. For example, public sector organizations may wish to invest in capital assets but will use non-profit objectives as part of their assessment. NPV is potentially a difficult method to apply in context of having an estimate what is the correct discount rate to use. This is particularly so when questions arise as to the incorporation of risk premia in the discount rate, since a evaluation of the riskness of the business or of the project in particular will have to be made, but may be difficult to discern. In this instance, the additional fixed cost will increase the risk profile of the business, and this will need to be factored in. NPV can most easily cope with cash flows arising at period ends and is not a technique that is used easily when complicated mid-period cash flows are present. हाँ, NPV हमेशा ईयर एंड के कैश फ्लोज को कंसिडर करता है, लेकिन मिड ईयर एंड कैश फ्लोज के साथ वो नहीं चल सकता. NPV is not universally employed, especially in a small business environment. The available evidence suggests that businesses assesses projects in a variety of ways: payback, IRR, return on capital employed. The fact that such methods are used, which are theoretically inferior to NPV, calls into question the practical benefits of NPV. Therefore, hints at certain practical limitations. The conclusion from NPV analysis is the present value of surplus cash generated from a project. If reported profits are important to businesses, then it is possible that there may be there may be a conflict between undertaking a positive NPV project and potentially adverse consequences on reported profits. This will particularly be the case of the project with long time horizons, large initial investments, and very delayed cash inflows. In such circumstances, the businesses may prefer to use accounting measures of investment appraisal. ठीक है, अभी ऐसे ही ये तीन चार और पॉइंट्स है बड़े बड़े, लेकिन बेसिक पॉइंट्स का बेसिक रंच तो यही है. 4 मार्क के लिए 4 पॉइंट्स चाहिए, ये 5 पॉइंट्स हैं, ये लिख देंगे. हाँ, ठीक है, इसी सही है। पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. कमेंट ऑन हाउ द प्रोजेक्ट would affect the different stakeholders of play company. तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है कितने? एक इन्वेस्टर्स, दूसरे गवर्नमेंट, कस्टमर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज, ठीक है, लोकल अथॉरिटी. तो अभी शेयर होल्डर्स पे आ जाते हैं. वेल्थ would decrease by negative NPV of the project 18,000. Risk will increase due to higher fixed costs, increased operational gearing. Society, more tires will be recycled, protecting the environment. Oh wow, मैंने से दिया था शायद यहाँ पे कि machine requires price of tire estimated
हाँ, रिसाइकल टायर्स, ये देखिए यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, तो सोसाइटी मतलब लोकल अथॉरिटी, ये भी बोल सकते हैं। कस्टमर्स में परसीव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू इंक्रीज बिकॉज इट इज एनवायरमेंटली फ्रेंडली। गुड। सप्लायर्स, एग्जिस्टिंग सप्लायर्स ऑफ particles will lose the business, although they will receive the 1,50,000 early termination fee. लास्ट में पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, ऊपर अच्छा ऊपर कौन थे, शेयर होल्डर्स थे, ओके ठीक है। नीचे आते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। प्ले कंपनी विल बिकम मोर अट्रैक्टिव टू ग्रीन चिप इन्वेस्टर्स, पॉसिबली मेकिंग फ्यूचर फाइनेंसिंग इजियर। आई थिंक ग्रीन चिप कंपनीज वो होते हैं जो एनवायरनमेंट में इन्वेस्ट करती हैं। चिप, नहीं ऐसा नहीं लग रहा है। झूठ दे रहा वही है रे ग्रीन, व्हाट इज अ ग्रीन चिप कंपनी? Green chip stocks are shares of companies that engage in practices seen as being environmentally friendly. वही green मतलब recycling, eco friendly। सही है, काफी बेसिक ही था। है। ये बार ये बार स्टक हो गया था, बहुत सी मिस्टेक की थी, इस बार नहीं हुआ। नोटिस किया।